Hey guys, welcome to the new video. In last two videos we studied two-line algorithm, that is simple DDA and direct method. Now we will study incremental DDA. So let's quickly revise them. Direct method, simple. In both the step, first we initially named the points as x1, y1, x2, y2. Then we find out the slope, that is m y2 minus y1 upon x2 minus x1. If our slope, then two conditions for slope. If our slope was less than equal to 1, if our slope was greater than 1. So if it is less than equal to, then x is incremented, and if it is greater than 1, y is incremented. Same here. If slope is less than equal to 1, x is x plus 1 and y is mx plus b, and here x is y minus b upon m. Here y is y plus m, here x is x plus 1 upon m. Now x is incremented till x less than or equal to x2, and here y less than or equal to y2. B is nothing but your y-intercept, that is y1 minus m x1, and this is the new value of y, that is x of I plus 1 is x plus 1, y of I plus 1 is y plus 1, that is next term is previous term plus 1. Here also the next y is previous y plus m, next x is previous x plus 1 upon m. तो आज अब हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल DDA. सेम फर्स्ट स्टेप, इनिशियल पॉइंट्स हमारे x1 y1 कॉमा x2 y2. सेकेंड स्टेप में हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे m y2 minus y1 upon x2 minus. These are the common steps for all the line algorithm. Third, if our slope is less than or equal to 1, if our slope is greater than 1, if it is less than or equal to, then x is incremented and here y is incremented. तो यहाँ पर y क्या होगा और यहाँ पर x क्या होगा, that's the main difference. So here y will be y plus y increment, and here x will be x plus x increment. So the new terms are x increment and y increment. Now what is y increment? Y increment is dy upon dx. And what is x increment? Dx upon dy. Now what is dx? x2 minus x1, and dy y2 minus y1. Okay, so initial points x1 y1 x2 y2. Calculate the slope m y2 minus y1 upon x2 minus x1. First slope is less than equal to 1 and if our slope is greater than 1. अगर हमारा स्लोप लेस देन और इक्वल टू 1 है तो x इंक्रीमेंट होगा और y हमारा y प्लस y इंक्रीमेंट, और अगर हमारा स्लोप ग्रेटर देन 1 है तो y में इंक्रीमेंट होगा यूनिट इंक्रीमेंट, और x हमारा x प्लस x इंक्रीमेंट, दैट इज y ऑफ I प्लस 1 इज y I प्लस y इंक्रीमेंट. x of I plus 1 is xi plus x increment, means the next term is previous term plus x increment or y increment. So this is very easy. Let's see it by an example. Solve the example with me. Draw a line between the points 8, 5 and 13, 12 by using incremental DDA method. Okay, so what is the answer? Our first step is locate the points x1 y1
is 8, 5, comma x2, y2 is 13, 12. Second step, slope y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2? 12 minus 5 upon 13 minus 8, which is 12 minus 5 is 7, 13 minus 8 is 5, which is equals to 1.4, means our slope is greater than 1. Now what was the condition if our slope is greater than 1? Y is incremented. If our slope is greater than 1, y is incremented. And what about x? x plus s increment. अब हमें x increment फाइंड करना होगा. x increment is dx upon dy. What is dx? x2 minus x1 upon y2 minus y1. That is 13 minus 8 upon 12 minus 5, which is 5/7. तो हमारा x increment क्या आया? 5/7. तो ये हमारे x के वैल्यूज़, ये हमारे y के वैल्यूज़. इनिशियल x का वैल्यू 8, y का 5. y is incremented 6, 7, 8, 9, 10, 11 up to 12. Now for each value of y, we will find the value of x. Next value of x is previous value of x plus x increment 5/7. 56 plus 5/7. That is 61 upon 7. 61/7 plus 5/7. That is 66 upon 7. 66 upon 7. Guys, solve with me fastly. Plus 5/7. 71 upon 7. 71 upon 7 plus 5/7 is 76 upon 7 plus 5/7 is 81 upon 7 plus 5/7, 86 upon 7. And here how many terms you have to calculate? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the last. Plus 5/7 is 91 upon 7. And here it is given 13. Okay. So this by calculating you get 61. We will directly 61 upon 7. First we have to write it in decimal and then we have to round it off. So 61 upon 7, I will directly write the integer value, that is 9. You write it in point because in previous questions we solved it by points. I will directly write the decimal values. 9, 10, wait a second, 76, 11. Here you will get 12. Here also 12 and here 13. Okay. I directly wrote in integer. You can write it in point. If your point decimal is less than or equal to 0.5, then the same integer. If it is greater than 0.5, then jump to the next integer. Now, as we proceed further, we will directly write it in the integer format because we cannot waste our time in these calculations. So here it will be 9, 10, 11, 12, 12, 13. So these are the values of x for particular values of y. So this is our answer. Now one more point I want to tell you that जो हमारे new x and y होते हैं, new x and y, they depend on the previous one. और हमेशा ऐसे नहीं होगा कि x of I plus 1 is xi plus 1. Sometimes it can be x of I minus 1 plus 1. Here you have to be very clear about this. X of I minus 1 will be x of I minus 2 plus 1. This is the next term. This is the previous term. So next term is previous term plus 1. हम लोग यहाँ पर भी x में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, y में इंक्रीमेंट कर रहे हैं. जब हम previous term का यूज़ करेंगे
हम नेक्स्ट टर्म के लिए हमेशा प्रीवियस टर्म का यूज़ करेंगे. So this is all about 3 algorithm. We studied 3 algorithm. First is direct method, second simple, and third is incremental. Direct method, simple, incremental. The common steps are: first, write down the initial points. Second step, find out the slope m, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Third step, अगर हमारा स्लोप लेस देन और इक्वल टू 1 रहा तो x में इंक्रीमेंट होगा, और अगर हमारा स्लोप ग्रेटर देन 1 रहा तो y में इंक्रीमेंट होगा. ये तो तीनों एल्गोरिदम्स में कॉमन है. अब x और y. डायरेक्ट मेथड में सिंपल लाइन का इक्वेशन है y mx प्लस बी. x हम लोग y b को यहाँ पर शिफ्ट करो, y माइनस बी अपॉन m. दिस इज़ वेरी इजी. सिंपल मेथड में y में इंक्रीमेंट होगा प्रीवियस y प्लस m. जस्ट रिमेंबर, जब y में इंक्रीमेंट होगा तो हम लोग स्लोप ऐड करेंगे, और जब x में इंक्रीमेंट होगा तो स्लोप का इन्वर्स ऐड करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हियर वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड. तो स्लोप डायरेक्टली y में ऐड होगा, x में उसका इन्वर्स ऐड होगा. दैट्स इट. इंक्रीमेंटल में तो कुछ कंसेप्ट ही अलग है. x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट ऐड होता है. जस्ट रिमेंबर कि डायरेक्ट मेथड में हमारे पास y इंटरसेप्ट है b, सिंपल मेथड में नहीं है, और इंक्रीमेंटल में हमारे पास एक, उस नाम से हमें याद रहता है कि इंक्रीमेंटल मतलब x इंक्रीमेंट एंड y इंक्रीमेंट. फर्स्ट इनिशियल पॉइंट्स, देन स्लोप लेस देन इक्वल टू 1 रहा तो x हमारा इंक्रीमेंट बाय 1. y हमारा क्या होगा, प्रीवियस y में हम लोग y इंक्रीमेंट ऐड करेंगे. तो मैम y इंक्रीमेंट का क्या फॉर्मूला है? y इंक्रीमेंट इज dy अपॉन dx. dy y2 माइनस y1, dx x2 माइनस x1. और अगर हमारा स्लोप ग्रेटर देन 1 है तो y इंक्रीमेंट होगा, और x हमारा प्रीवियस वैल्यू ऑफ x में हम लोग x इंक्रीमेंट ऐड करेंगे. x इंक्रीमेंट इज dx अपॉन dy. dx is x2 minus x1, dy is y2 minus y1. So this, I think these 3 algorithms are very clear. Now you will never forget these 3. नाउ हमारे अब 2 बचे हैं. नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी क्लियर हो जाएंगे, एंड देन वी विल मेक अ फाइनल चार्ट, सो दैट एक ही पेज पर एक ही बॉक्स में हम लोग जस्ट 2 या 3 सेकेंड्स में ये सारे रिवाइज कर सकें. ओके देन, दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो. प्लीज़ लाइक द चैनल, share the videos with your friends and subscribe it. Okay then, thank you, bye bye.